Class 8 History Chapter 1 How, When, and Where. Topic 1 How important are dates? I have divided the paragraph into points to make it easy. First point, there was a time when historians were fascinated with the dates. Second point, there were heated debates about dates on which rulers were crowned or battles were fought. Third point, in the common sense notion, history was synonymous with dates. Fourth, you may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Fifth, is such a concept true? Sixth, history is certainly about changes that occurs over time. Seventh, it is about finding out how things were in the past and how things have changed. Eighth, as soon as we compare the past with the present, we refer to the time we talk of before and after. Ninth, living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. Tenth, we take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. 11th, but most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. 12th, watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? 13th, looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways? 14th, reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. 15th, all such historical questions refers us back to the notions of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. 17. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happens over a period of time. 18th, people in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. 19th, there can be no one clear date for a process such as this. 20. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. 21. All these things happened over a stretch of time. 22. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. 23. Why then do we continue to associate history with a string of dates? 24. This association has a reason. 25. There was a time when history was an account of battles and big events. 26. It was about rulers and their policies. His 27th, historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. 28. For events such as these, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates about dates continue to be important. 29. As you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians how write about a host of these issues, of other issues and other questions. 30. They look at how people earn their livelihood, what they produce and eat, how cities developed and market came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. Now in Hindi, I will same I will explain in Hindi. कक्षा 8 इतिहास अध्याय 1 कैसे कब और कहाँ तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। टॉपिक 1 पहला, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही
खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीख पर गर्मागर्म बहस चलती थी। आज समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ हैं भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा? रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय के बारे में सोचने, समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटित हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देना शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति समाज किस तरह बदले। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।